So let us try to another question. And okay, question number 11. Okay, so what is our question number 11 here? Okay, so let A, which is a member of which is element of JLN3Q. अच्छा, यहाँ पे जो आपका जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो कहाँ से हैं? Q से हैं, ठीक है. सो विथ ये प्रॉपर्टी दी हुई है. अच्छा, ये प्रॉपर्टी इम्प्लाइज क्या करती है? यस, ये इम्प्लाइज करती है कि आपकी मैट्रिक्स कैसी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है. विच इम्प्लाइज ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट. एंड एज यू कैन सी हियर योर, इसके मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं? क्यों से आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अब क्यों से आ रहे हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको? जरा देखो क्या मिलेगा. ओके, लेट अस सी व्हाट वी विल गेट. ओके, सो एज वी नो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या आइगन वैल्यू क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स +-1, right? You can use you can verify it by using this thing AV, but by what? How you will verify it? By using this thing. Okay, are you getting my point? Yes. When you will multiply both sides A transpose, what you will get? What you will get? Yeah, A transpose A, and this thing got transpose, and here what you will get? You will get A transpose lambda V, and okay, here you will get what? You will get lambda square V, and here you will get I into V, and which implies that lambda is equal to what? 1, which implies that lambda is equal to +-1, right? So easily you can verify it. Okay, so what is given here? A into 1 1 1, ये क्या दिया हुआ है? यस, कॉलम वेक्टर दिया हुआ है, एंड इंटू लैम्डा इंटू 1. बेसिकली यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही है. अच्छा, तो एज यू नो आइगन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? +-1 होती है, ठीक है. एज यू कैन सी हियर योर एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्लस क्यू के एलिमेंट है, ठीक है. सो दैट इज वाई इट्स आइगन वैल्यू क्या? +-1. सो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? +-1 आ जाएगी, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आइदर -1 और +1, राइट. ओके, वेल, we will try to do another question. Okay, so another part. So what is our next part? Okay, see, if you want you can do this question another way, so that, okay, see, solution. What is given here? Here A into 1 1 1 and lambda into 1 1 1. Suppose we don't know what is our orthogonal matrix and that thing. Suppose for 1 minute we don't know about, then just take what you will take. Okay, as you know, if A V is equal to lambda V, then it implies that V transpose A transpose equal to lambda V transpose, right? So just multiply here by what? Okay, A transpose ले लो, ठीक है. दोनों साइड क्या ले लो? A transpose ले लो यहाँ पे. So it implies A into A transpose 1 1 1, and it is equal to what? It is equal to A transpose and lambda into 1 1 1, and which implies that what? Because it is given I3, right? I3 into 1 1 1, right? And here let us take both side. What we can multiply it 1 1 1, right? We can do. So let us write. So here what you will write here? Okay, 1 1 1, and here another thing, A transpose lambda 1 1 1. See, what you will get here? You will get this thing equal to what? This thing equal to lambda into okay, 1 1 1 and into lambda 1 1 1. So we will get what? 3 equal to 3 lambda, right? Okay, so it implies, sorry, lambda square na. So lambda square is equal to 1. So in that way also you can see, if you don't know what is property of orthogonal and that thing, then again you will do this thing, you will get +-1, right? So your answer is +-1, and let us write what, let us read what is option part. इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? डिटरमाइन x + y + z where x y z is given by. Okay, so how to do? Why not pause video and try to think about? Okay, so let us try to solve. Okay, so इसका पार्ट भी क्या है? गिवन क्या है? सबसे पहले वो देख लेते हैं. x + y + z, इसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. एंड गिवन क्या है? गिवन है व्हाट?
गिवन है कि एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1 0, राइट, इट इज़ गिवन. सो अच्छा जरा सोचो इसको क्या लिख सकते हो आप, थिंक अबाउट. यस यू आर राइट, बट कैन यू राइट इट? यस 1 1 1 एंड x y z you can write it as, right? Okay, so okay, as you know this is equal to what, 1 into 1 into 1 and this is a into 1 minus 1 0, right? अच्छा जी, और क्या लिख सकते हो इसे? Okay, it is equal to some lambda, right? So 1 1 1 into lambda into, we don't know what is lambda here, just think of like you don't know about lambda. Okay, so here it will be what, x plus y plus z equal to this thing, and x plus y plus z equal to what, lambda into 1 into 1 into 1, but see lambda not equal to 0. Okay, provided lambda not equal to 0, so here 1 minus 1 0, so which implies x plus y plus z is equal to lambda into 1 and into 1 1 into minus 1 and 1 into 0. So it is equal to lambda 1 minus 1 plus 0, which is equal to 0. So what you will get, x plus y plus z equal to 0. Okay, so here this thing equal to x plus y plus z equal to 0. So here your answer is x plus y plus z equal to 0, and here lambda की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी. ठीक है, आई होप you are getting it and you enjoyed this question. Okay, bye bye.